Good morning, students. Today I am going to tell some important question of exercise 4.2. The first I am starting second part of question second. Second part is like this: pi x plus y equals to 9. Equals to 9. Now the question is, you have to find फोर सॉल्यूशन. आपको फोर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. फॉर दिस either you have to take the value of x or value of y. For this, first I am taking value y. Let I am taking y is equal to 0. Let y equals to 0. Now y is equal to 0. You have to substitute in the equation. Now after substituting you will get pi x plus 0 equals to 9. Now it is pi x equals to 9. Now here, now this is one variable equation. Now from one variable rule you have to find the value of x, and x equals to 9 upon pi. Now you have to find four solution. Now for second solution, let us take the value of y again. You can also choose the value of x. Suppose I am again taking the second value of y. Suppose I am taking y equals to 1. Let y equals to 1. Now y equals to 1. This value you have to substitute in given equation. Pi x, and in place of y, where is y in the equation? Y in the equation is here. So in place of y you will write 1. Now pi x plus 1 equals to 9. Now this will become one variable equation, and you have to solve from one variable rule. Pi x 1 you have to transfer on right side. It is its sign change, 9 minus 1. So pi x is equal to 8. Then x is equal to 8 upon pi. Similarly, you can find the two more solution. Either you have to take the value of x or you will take the value of y. There is no need of substitute the value of pi, that is 22 upon 7. Now let us see the question number 3. What is question number 3? Question number 3 is like this: check whether of the following are solution or not of the equation x minus 2y is equal to 4. Check करना है. Check means you are given the x and y. Check means this x and y value satisfy the given equation. So 0 2 you have to satisfy the given equation. Means x और y को पुट कर देंगे, देखेंगे कि आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं. दैट मीन्स लेफ्ट और राइट साइड का आंसर मैच करता है या नहीं. फॉर दिस the equation is x minus 2y equals to 4, and the given value are 0 and 2. Now I am writing equation x minus 2y equals to 4. The value is x minus 2y equals to 4, and the value given in first part 0, 2. नाउ सब्स्टिट्यूट एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में. तो लेफ्ट साइड में ही आप वैल्यू पुट करोगे.
तो x is 0 minus 2, y is 2. Now solve left hand side. It is 0 minus 4. It is minus 4. Now this answer you have to match with right side answer. This answer is minus 4 and right hand side answer is plus 4. That means left hand side and right hand side answer will not match. That means left hand side is not equals to right hand side. So that means given value of x and y, that is 0 and 2, is not the solution. 0 and 2, this value. Now 0, 2 is not the solution of, is not the solution of given equation. Similarly, you can do other parts. In this way you can do other parts. There are fifth part. तो fifth part आप अपने आप करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे. Now let us see question number 4th. What is question number 4th here? Question number 4th is question number 4th is find the value of k. k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. k की वैल्यू फाइंड करनी है. x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन. तो आप क्या करोगे? सॉल्यूशन मीन्स आप इक्वेशन में पुट करने के बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, मीन्स इक्वल साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो x और y पुट कर दीजिए, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी. तो योर इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k. नाउ योर इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 4th. Your equation is 2x plus 3y equals to k and given value is a solution. क्या है given value? x equals to 2 और y equals to 1. Now x is equal to 2, y equals to 1. You will substitute in the equation. 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो x की जगह 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू k. ये इक्वल साइन क्यों आया? क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन है. x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 क्या है? ये वैल्यू आपकी सॉल्यूशन है. These value are the solution. Now solve it. 2 into 2 4 plus 3 equals to k. 4 plus 3 7 equals to k. So k की वैल्यू कितनी आ गई है? k is equal to 7. So solution you have to put in the equation and left hand side answer equals to, equal sign पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, equals to right hand side. So in homework आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. होमवर्क है आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 4.2. Thank you. That's all for today.